the next one, we have understood what is database. Now the term is database management system. Okay, so we are adding a word with the database, that is management system. Okay, so management system means, okay, you have collected your data. You have collected your data. The data is related to each other. That collection is fulfilling some implicit properties. Now you are saying, okay, this is a database. For example, a database of the student information, as I took one example yesterday, कि ठीक है आपको स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेना है तो आपने कहा कि ठीक है मैंने एक टेबल बना लिया सिंपल. जस्ट अ मिनट. ठीक है. And I have three columns in that table. First one is the registration number, second one is the name of the student, and third one is the marks of the student in this particular subject. Okay. So I have created a table for it. Okay, I have collected data. This data is related, name is related to registration number, marks is related to the registration number, or you can say that it is related to the combination of registration number and the name both. Now I want to insert some data in this table. I have 63 students in this section. Okay, so I want to insert registration number of each student here. Okay, and the name of each student is here, and the marks of each student is here. Are you getting my point or not? ठीक है, ये पहले स्टूडेंट का आपने एंटर कर दिया, आउट ऑफ 40 is scoring 35. Now you want to insert second row, third row. So it means you need a program और a query. जैसे आपने सुना होगा डेटाबेस में कि यार हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर इंसर्शन. फॉर एग्जांपल ये हो सकता है मैंने किसी स्टूडेंट के मार्क्स गलत इंसर्ट कर दिए, ना वो आई वांट टू अपडेट इट. ओके, so what we are doing, or even when I'm creating this table, I need a query to execute. That is a create table query. So try to understand that I need a package which will help me in terms of the programs, okay, to create and maintain the database. I need a package which help me, है ना. तो मुझे set of programs चाहिए, collection of programs चाहिए. By using that collection of programs, I can create my tables. I can insert data in that, I can update data in that table, I can even edit my data, I can delete data. So several different type of the operations I can perform on that. Even I can add more columns in that table. If I want to drop any column, then I can do that. Even I want to drop the table itself, तो भी मैं कर सकता हूँ. So it means I need a collection of programs which will enable me to create and maintain the database. So that complete package means you are creating a database by using the set of programs, and you are maintaining that database using the set of programs. So it means if you are working with the database, you need two things. एक तो आपको database क्या collection करना है और create करने के लिए कौन से programs आपको execute करने हैं. So that complete package will be called as a database management system. So I think you have understood that whenever I'm talking about the database, I'm simply saying that, okay, it is the collection of interrelated data when I'm talking about the database. But when I'm saying database management system, it is a software. It is a software system which will allow me to define, construct, manipulate, and sharing my database among users and the applications. So these are the four important points. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सम पीपल विल से ओके इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल यूजर्स to create and maintain the database. Okay, this is a simple definition. It is a system, it is a software system. It is a software. What is DBMS? किसी ने one word में answer दे दिया, it is a software. Okay, but what it is providing you, क्या provide कर रही है आपको? It is allowing you, or it is providing a facility to define, construct, manipulate, and sharing the database. Please remember these four words. Okay, this is now the complete part of your database management system. It allows you to define, construct, manipulate, and sharing the database among various users and the applications. ठीक है, तो जैसे हमने database पढ़ा था, we have a general definition. After that, we completed that, or you can say that we supported that definition by giving three implicit properties. Now we have the definition of the database management system. Now we are supporting it by giving or elaborating these four processes: defining, constructing, manipulating, and the sharing.
So now come one by one to these defining. What do we mean by defining a database? What do we mean by defining our database? Okay, so database is what? Database is what? Database is a collection of related data. So when you are storing data, you must know the data types of each and every data which you are going to store. Am I right or not? अब आपने registration number store करना है, you must know what data type of it is. You are storing names of the student, you must know that what is the data type of the name. You are storing marks, so you must know what is the data type of that. So defining a database involves specifying the data type. The structure means you are storing it in the tabular form, where the number of the columns is available, and the constraints of the data to be stored in the database. Constraints of the data. What do we mean by the constraints of the data? ठीक है, अगर आपको लगे ना बीच में कि मेरी स्पीड ज्यादा हो गई है बोलते बोलते थोड़ा फास्ट, तो मुझे कह सकते हो सर थोड़ा सा स्लो. सो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, देखिए आप समझिए, अभी तक हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं. अब मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, आप एक बैंकिंग सिस्टम के लिए सिंपल टेबल बना दीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, यू विल सिंपली राइट हियर अकाउंट नंबर एंड द बैलेंस. Okay. Now you can specify a constraint on the data, means on the balance. That balance must not be less than 1000. 1000 से कम नहीं होना चाहिए. Okay. If it is going below to the 1000, now what appropriate action you want to perform, that totally depends on the requirement of the client. Please listen me carefully. Whatever the action you want to perform, when it will go down, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट. जैसे हमने कह दिया यार 1000 होना चाहिए, ठीक है. अब अगर इससे कम जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर just you are this is your account 1 to 1, and you are just simply transferring amount 500 to account 1 to 2. ओके, कंस्ट्रेंट हमने क्या स्पेसिफाई किया कि 1000 से कम नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट एक्शन यू रिक्वायर डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट. क्लाइंट कह देता है कि ठीक है, मेरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वी आर नॉट पुटिंग सच अ हार्ड कंस्ट्रेंट. व्हाट वी विल डू, अगर ठीक है 1000 से कम हो जाता है, देन वी विल सिंपली चार्ज एन अमाउंट ऑफ 50 rupees. It means when you are transferring 500 amount, okay, so after transfer of this amount, try to understand, after transfer of this amount, this is a 500 and this is a 2500. Now what will happen, आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहेगा नहीं, इट इज लेस देन 500, जस्ट चार्ज एन अमाउंट. ओके, और क्या हो सकता है कि आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि इफ इट गोज लेस देन 1000, डोंट अलाउ टू ट्रांसफर. अगर ये 1000 से कम हो रहा है तो आप अलाउ ही मत करें ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है. सो कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, these are the constraints which are explicitly given by the client, but some constraints are implicit. Some constraints are implicit, like आप ये कह सकते हैं that the value means you can derive the value of the balance. Or for example, let me take वन मोर एग्जाम्पल. हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे अभी थोड़ी, जब हम यहाँ डायग्राम की बात करेंगे. सो आपके एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं और इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. वी विल टॉक अबाउट मोर डिटेल व्हेन वी विल डील विद द ईआर डायग्राम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. डिफाइनिंग अ डेटाबेस मींस व्हाट? थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटा. ओके, याद रहेगा सबको? ओके. And Yes, sir. yes, very good. And one important information, whatever you are defining means the descriptive information. Okay, you can store it. You can store it somewhere. Okay, and that storage will be called as a metadata. आपने एक बहुत बड़ा database बनाया. You are giving the definition of data types, structures, and the constraints. You are specifying number of the constraints on the number of the tables. Let's suppose you have 5 tables. Okay, और अलग अलग tables पे अलग अलग constraints are there, are total 10 constraints like that. So you can log it, you can record it. So that record will be called as a metadata simply. Okay. The second term was
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सेकंड टर्म का था हमारा कंस्ट्रक्टिंग. जस्ट सी दिस वन, डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड शेयरिंग. नाउ कंस्ट्रक्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टिंग? कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो? आपने ये डिफाइन कर दिया कि ठीक है आप डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, क्या क्या डेटा टाइप होंगे, स्ट्रक्चर कौन सा होगा, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या अप्लाई करेंगे. नाउ यू विल स्टोर योर डेटा ऑन द स्टोरेज मीडियम, जो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है. ठीक है, मान लीजिए आप लोकल सर्वर पे अभी आप बना रहे हैं अपना डेटाबेस. ठीक है, सो यू हैव इंस्टॉल्ड सम सॉफ्टवेयर लाइक ऑरेकल एंड द MySQL, है ना. दैट पैकेज इज अलाउइंग यू टू परफॉर्म दीज टास्क. यू कैन डिफाइन, यू कैन कंस्ट्रक्ट. अब आप MySQL पे काम कर रहे हैं या फिर आप Oracle पे काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? Now you are creating your database, you are actually storing the data. So where the data is going, data, you are storing that data on the medium. Okay, that could be a hard disk अगर आप local server पे काम करें, but it is controlled by that DBMS. This is important thing, that is controlled by the DBMS, that is controlled by that particular software. So the constructing is the process of storing the data on the some storage medium that is controlled by the DBMS. Okay. जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं, देखिए अभी आप बात कर रहे हैं कि यार हम डेटाबेस सिस्टम, क्या डेटा स्टोर करने के लिए पहले से कोई हमारे पास नहीं था? यस, वी ऑलरेडी हैव अ सिस्टम दैट इज फाइल सिस्टम. यस और नो? आप अभी अपने लैपटॉप पे काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपके पास डिफरेंट वर्ड फाइल्स है, एक्सेल फाइल्स है, आप क्या करते हैं, हार्ड डिस्क का पार्टीशन कर रखा है ना. फिर आप एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज लेके आप अपने डेटा को हिरारिकली उसमें स्टोर कर रहे हैं. यू आर स्टोरिंग योर फाइल्स समवेयर. आप अपनी एक्सेल शीट को भी स्टोर कर ही रहे हैं, है ना. तो आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स अस टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द फाइल्स. तो वी हैव द फाइल सिस्टम, बट उसमें क्या डिफरेंस है, डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है? वी आर स्पेसिफिकली सेइंग हियर दैट इज कंट्रोल्ड बाय द डीबीएमएस, बट व्हेन वी आर यूजिंग द फाइल सिस्टम दैट इज enabled by the operating system. So it means there are some basic differences between these two systems. और आप ये कह सकते हैं कि when we had a system that is a file system to store the data and we switched on the database management system, it means there are some drawbacks or some lacks in the existing file system which do not fulfill our requirement. That's why we have switched on the database management system. That's why we have some software like Oracle and the MySQL and we are creating the database. अब तो आपके पास क्या नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस भी आ गए. ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है. इफ आई टॉक अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस, इट इज स्ट्रक्चर्ड. अब तो आपके पास नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस भी है वेयर यू कैन स्टोर योर डेटा. सो अभी हम देखेंगे कि यार कौन से डिफरेंसेस हैं या कौन से ड्रॉबैक्स हैं फाइल सिस्टम के साथ. ठीक है, जो जिसके कारण हमें डीबीएमएस पे स्विच करना पड़ा. But before moving on that, just complete this one. So we have done defining, we have done constructing, now the manipulating. Now the manipulating. Okay. So what do we mean by the manipulating? आपने डेटा स्टोर कर लिया. देखिए ये स्टेप बाय स्टेप भी चल रहा है एक तरीके से. आप देखें, आपने पहले डिफाइन किया, फिर डेटा को मीडियम पे स्टोर किया. नाउ यू आर सेइंग दैट ओके मैनिपुलेटिंग द डेटा मींस व्हाट? Manipulation. You want to retrieve the data, you have stored it, now you want it for some purpose. So you can retrieve the data, you can update the data, you can insert the data. Okay, even if you find okay कि यार ठीक है पहले जो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे थे दैट वाज ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड द मार्क्स. नाउ आई वांट टू ऐड ईमेल आईडी आल्सो देयर. ठीक है, जिससे मैं डायरेक्टली वहां पे मेल कर सकूं. ठीक है, सो आपने कहा ओके आई वांट टू ऐड वन मोर कॉलम. क्यों? क्योंकि आपका जो रियल वर्ल्ड है ना, सो द चेंजेस आर रिफ्लेक्टिंग देयर. ओके, सो आप देखिए मैंने पहले भी कहा था कि it is associated or it reflects the real world. So whatever the updates you perform on the database, it reflects in the mini world. Okay, so that is again a manipulation of the data. You want to generate some reports from the data. So these are some important points which these are some important tasks which we can perform with the help of the DBMS. Try to understand. Defining is the process which we can perform with the help of the DBMS. Constructing is the process which we can perform with the help of the DBMS. Manipulation, again, this is the process which we can perform on the database with the help of the DBMS. Okay. Then finally, the sharing. Sharing means you can share your database with the multiple users. ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे मान लीजिए बैंक ने एक database बनाया,
ठीक है, बैंकिंग सिस्टम की हम बात करें, सो इज इट पॉसिबल दैट एट ए टाइम ओनली वन कस्टमर कैन एक्सेस दैट सिस्टम? एक ही बंदा ट्रांसफर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, योर अकाउंट इज इन SBI एंड माई अकाउंट इज ऑल्सो इन SBI. When I'm transferring some amount from my account to my friend's accounts, at that time no one is allowed to transfer. No, this is not the case. Simultaneous transactions वहाँ पे perform हो रहे हैं. Simultaneous transfer of the amount वहाँ पे perform हो रहा है. It means we are allowing users to work on that. ठीक है. So we are allowing multiple users and the programs to access the database simultaneously. और ये कब होगा? When you are working with the database management system. By using that software, you can allow multiple users to access your database. Is it clear or not? ये मुझे बताएं अभी तक. Yes sir. Yes, sir. समझ में आया? ठीक है, तो ये देखिए 3 implicit properties उसके साथ है, ये 4 important processes database management system के साथ है. Now this is the complete one. Now this is the complete one. We have taken this complete information from different textbooks. Now it is complete. Now coming to the next one, what is application program? So an application program accesses the database by sending queries. As I told you कि जब आप database की बात करते हैं तो आप कहते हैं यार we perform some queries, SQL language में हम use लेते हैं. So we are accessing the database by sending queries or request for the data to the DBMS that I want data from this database. Okay. क्योंकि DBMS जैसे मान लीजिए आप MySQL पे काम कर रहे हैं या फिर आप Oracle पे काम कर रहे हैं, ठीक है. So there are number of databases. जैसे कि आप मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास एक DBMS है, ठीक है. इस DBMS में हो सकता है आपके पास एक मणिपाल जयपुर का डेटाबेस है. Just a minute guys. Okay. तो हमने कहा कि ठीक है, वी हैव अ DBMS, database management system, means we have a software in which I can create different databases. I can create a database for the Manipal University Jaipur. I can create a database for Manipal University Sikkim, है ना. So there are 2 databases. अब ये हो सकता है कि Manipal University जयपुर में भी आपने different tables बना रखी है, one table for CCE, one table for IT, one table for CSE, ठीक है. So you can request the data from the DBMS, so you have to specify कौन से database में से चाहिए. देखिए मैं रफली ले रहा हूँ यहाँ पे, बट फिर भी आपको समझने की जरूरत है कि when you are working on a software, it may be possible there are different databases, है ना. तो आपको कौन से database से डेटा चाहिए और उस database में भी कौन सी टेबल में से डेटा चाहिए, ठीक है. So ये जब हम SQL queries करेंगे, we will work on that. ठीक है, so don't worry about this, but the application program access the database by sending queries or request the data to the DBMS. ठीक है, now it's the responsibility of the DBMS to execute that query. If it is synthetically correct, then then it is the responsibility of the DBMS to provide the output. ठीक है, so that is called as a SQL engine, which is associated with the DBMS, which executes this one. We will go through the structure of the DBMS also, कि कौन कौन से वहां पे मॉड्यूल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं which are playing important role. So a query typically causes some data to be retrieved. Okay, now there is a term transaction. देखिए ये मैंने अभी ले लिया because whenever we say transaction, तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, because हम क्या कर रहे हैं, we all people are now indulge in banking transactions. ठीक है, पैसा, ठीक है, मोबाइल भी रिचार्ज कराना है, वी आर जस्ट यूजिंग आवर यूपीआई और मोबाइल रिचार्ज करा लिया, फ्रेंड को पैसा भेजना है, फोन पे लिया पैसा भेज दिया, तो हमारा पहला वर्ड ये होता है यार मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया, तुम देख लेना, ठीक है, अमाउंट रिसीव हुआ है नहीं हुआ. तो हमारा माइंड हमेशा क्या करता है, ऑलवेज रिलेट्स दिस वर्ड विद समथिंग which is related with the money transfer. But whenever we are talking about the database, okay, so transaction means what? Reading the data from the database or writing the data into the database, then that is transaction. ठीक है,
means it may cause some data to be read and some data to be written into the database, then it is a transaction. ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर किसी मान लीजिए आई एम इंसर्टिंग डेटा फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, सो आई एम राइटिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड द मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट इनटू द डेटाबेस, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन, दिस इज अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे वो नहीं है मनी ट्रांसफर से रिलेटेड, यू आर रीडिंग फ्रॉम द डेटाबेस और यू आर राइटिंग इनटू द डेटाबेस, दैट इज योर ट्रांजैक्शन. तो जब हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल पढ़ेंगे तो वहां पे रीड एंड राइट, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. read and write, please keep these two important instructions in your mind, reading the data and writing the data. So for that purpose we use two important instructions, read and write. Okay, so that is called as your transaction. Is it clear? ठीक है, so these are some important functions. तो हमने देख लिए DBMS के. Some other important functions are what? Protecting the database and maintaining it over a large period of time. These are two important functions apart from four processes, ठीक है ना, जो आपको DBMS provide करता है. The first one is protecting the database, second one is maintaining it over a long period of time. ठीक है, so कि ठीक है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है which allows you to define the database. Now you have created your tables, you have stored data in that one, you can manipulate the data, है ना, फिर आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है. बट अगर मान लीजिए सिस्टम फेल हो गया, कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर में कोई बग आ गया, या फिर मान लीजिए कोई यूजर अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस करना चाहता है. अब आपका अकाउंट है, आपके पास यूपीआई आईडी है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर बैंक अकाउंट, आप वहां से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी. इफ समवन ट्राइज to access your account and want to transfer the amount, so there must be some security layers, there must be some security layers. जब हम security layers की बात करते हैं, this is a very broad area. Security at network, security at application level, security at network level. तो जब हम DBMS की अभी बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि okay, we are providing two types of the protections. The first one is the system protection and second one is the security protection. System protection is against hardware or software malfunction or the crashes. ठीक है, for example मान लीजिए you are transferring, you have account A, try to understand, you have account A in which you have amount 1000, there is account B in which the amount is 1000. Okay, this is very interesting example. Okay, by taking this example, now we will explain a lot of concepts which are related with the database. तो आपने क्या किया, you say, and you simply transfer 100 rupees to B. ठीक है, so ideally क्या होना चाहिए, once you will perform this operation or this transaction happens successfully, A में कितना होना चाहिए 900, B में कितना होना चाहिए 1100. Is that clear or not? अब देखिए यहाँ पे देखिए, the sum of A plus B, what it is, 2000, means before the execution of the process, and after this one successful completion, what it is, again 900 plus 1100, that is your 2000. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसफर कर रहे थे बट हुआ क्या कि ये ट्रांसफर हो नहीं पाया. अगर ये ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इन दैट केस बी में कितना रह जाएगा, ओनली 1000, because it was not credited to the B's account, it has been debited from the A. Now we perform A plus B, that is your 1900. So before the operation it was 2000, after the execution this is 1900. हम कहते हैं no, this is not correct because this system is not in consistent state. एक word आगे आएगा consistency, I'm explaining this word right now also. तो हम कह देते हैं system is not in consistent state. Okay, we can say okay, this is the state X and this is the state Y. Your system is moving from state X to Y, but the state is not consistent, means it is not correct, you are getting the different output. But होना क्या चाहिए था,
यहाँ पे भी आपको 2000 था तो यहाँ पे भी आपको 2000 मिलना चाहिए था। सो अब ये क्या हुआ कि जो आपने 100 ट्रांसफर किया, ठीक है, इट हैज बीन डेबिटेड, बट ये बी में क्रेडिट नहीं हुआ है, सो इट मींस देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू हैंडल दिस सिचुएशन। ठीक है, अभी हो सकता है किसी भी रीजन से नहीं हुआ हो सकता है आप ट्रांसफर, ठीक है, आपके सर्वर पे अपडेट हो गया, बट वो जो पैकेट जाना था वो किसी नेटवर्क फॉल्ट के कारण पैकेट जो है रिसीवर के सर्वर तक नहीं पहुंचा, वो पहले ही कहीं पे ड्रॉप हो गया ड्यू टू कंजेशन, वहां पे नहीं पहुंची वो इन्फॉर्मेशन, वो अपडेट नहीं हो पाया। सो वी नीड अ मैकेनिज्म टू हैंडल दिस सिचुएशन। और वो क्या होता है आपको पता है, जब भी आप मान लीजिए कभी कोई रिचार्ज कर रहे हैं या अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आपका अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है तो आपके पास एक मैसेज आता है विद इन 48 आवर्स दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बैक इनटू योर अकाउंट। सो आफ्टर 48 आवर व्हाट यू विल गेट योर 1000 अगेन। So you have recovered your database from this fault. You have recovered your database from this fault. So whenever you are working with the database management system, it is the responsibility of the software to provide two types of the protections. One is the system protection and second one is the security protection. So system protection against hardware or software malfunction, and security protection is definitely against unauthorized or malicious access. So whenever you create a database, you can create some passwords. ठीक है, आप पासवर्ड बना सकते हैं कि ठीक है उस डेटाबेस को कोई उस एक्सेस ना कर सके विदाउट पासवर्ड। ठीक है, अब अगर आप पासवर्ड दे देते हैं किसी को या आपका लीक हो जाता है, फिजिकली आपने कहीं लॉस्ट कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते है ना। जैसे हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि दिस इज द ओटीपी, प्लीज डोंट शेयर इट विद एनी अदर पर्सन। ठीक है, वी जनरेटेड अ पासवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। इफ यू विल फीड दैट पर्टिकुलर ओटीपी मींस दैट इज अ पासवर्ड, देन दैट ट्रांजेक्शन विल कंप्लीट। ठीक है, बट आपका वो जो ओटीपी है, ठीक है, किसी ने आपने किसी को बता दिया, ठीक है, किसी ने आपको कॉल किया, कहा कि सर आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, प्लीज आप मुझे ओटीपी बता दीजिए आपके अभी आने वाला है, या हम आपका आधार कार्ड को अकाउंट में वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो पर्सन था जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाह रहा था, ही और शी इनिशिएटेड अ ट्रांजेक्शन from your account, but to complete that transaction you have to provide a password there, that is in the form of the OTP, that is in the form of the OTP. This is the simplest way to explain. आप अपने, because you people are going to be technocrat, हो सकता है किसी पर्सन कोई है तो उसको नहीं पता क्या ये ओटीपी है, तो तुम उसको सिंपली समझा सकते हो कि यार ये समझो, यू आर ट्रांसफरिंग एन अमाउंट, so for to transfer that you have to authorize this that particular authenticate और authorize that particular transaction। तो ये एक तरीके से पासवर्ड है, डू नॉट शेयर इट विद एनी अदर वन। इफ यू विल शेयर तो फिर तो वो तो ब्रीच हो गया, वो तो आपकी इशू है ना। सो सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, ठीक है, इवन यू कैन अप्लाई एट डिफरेंट लेवल्स। आप टेबल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, टोटल डेटाबेस पे भी कर सकते हैं, इवन आप रोल्स डिफाइन कर सकते हैं यूजर्स के। देखिए हमने क्या कहा था, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस, हमने कहा था मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस। ठीक है, तो मान लीजिए आपका स्टूडेंट का मार्क्स का एक डेटाबेस बनाया है मैंने, डीबीएमएस का। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, 63 तो स्टूडेंट्स हो गए दोज हु कैन एक्सेस दिस डेटाबेस, और एक मैं हो गया फैकल्टी, है ना। सो मैंने बनाया, आई एम कॉलिंग माई सेल्फ एज एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डिफाइन रोल्स, आई कैन डिफाइन रोल्स फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक और रोल बना दिया, दैट इज एचओडी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रोल्स डिफाइन कर सकता हूँ, ओके फॉर 63 स्टूडेंट दे कैन ओनली व्यू द डेटा, they cannot edit, they cannot insert, they cannot update, but with the faculty administrator, okay, he can view and he can also add the data. Okay, I can update the data, okay, I can view as well as I can update, I can create। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ठीक है मैं यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, even I can update the structure of the table with the HOD, I am also allowing view and update of the data, but I can even constrain that, okay, you cannot update the structure of my table. If there are only 3 columns, then it's okay, you can update whatever, but you can't add
one more column or you can't drop a particular column. So different levels पे आप roles define कर सकते हैं कि ठीक है, I want to give only view of the data, or I want to allow you to work with the data, or I want to allow you to work with the structure of my database also. ठीक है, समझ में आ रही बात? एक तो आप टेबल में ही चेंजेस कर सकते हैं, यू कैन ऐड सम कॉलम्स, यू कैन ड्रॉप सम कॉलम्स, मींस यू आर एक्चुअली वर्किंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ माय डेटाबेस. सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, एक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप टेबल के साथ ही छेड़खानी कर रहे हैं, वहीं पे चेंज कर रहे हैं. डेटा, this is the another level. Okay, you can view the data as well as you can update the data, you can update the marks of the student. And the third one is the only view level. You cannot do anything. Okay, so security protections at different levels. So इसके लिए आपको समझना भी पड़ेगा कि levels क्या होते हैं. We will go through that in our next coming lecture and we will talk about the data view. So there are three views: physical, logical, and the view. So, but at this point of time, try to understand there are multiple users. You can define the roles. आप हर स्टूडेंट के लिए एक रोल डिफाइन कर सकते हैं और आप डेटाबेसेस के साथ पासवर्ड लगा सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग योर डेटा ओवर अ टाइम. आपने आज एक डेटाबेस बनाया है, यू क्रिएटेड अ टेबल. आज आपने एक डेटाबेस बनाया एमयूजे का. ठीक है. Now you have 3 tables in that. Okay. आपका टाइम थोड़ा और पास हुआ. Now we are starting one more branch. For example, biotech. तो हमने कहा okay, I need a table for the biotech. So I am maintaining my database. ठीक है. I can add in that one. या हो सकता है सीसी की टेबल में कुछ अपडेट करना है मुझे आफ्टर अ टाइम. सो हम हमेशा क्या कहते हैं, a typical large database may have a life cycle of many years. ऐसा नहीं कि आज आपने बनाया और वो डेटाबेस ठीक है, कुछ ईयर्स के बाद या कुछ मंथ्स के बाद वो एग्जॉस्ट हो गया. नो. सो द DBMS must be able to maintain the database system by allowing the system to evolve. That's why I used a word here, evolve. Okay. So to evolve as requirements change over time. ठीक है. बट जब आप फाइल सिस्टम के साथ काम करते हैं ना, ऐसा नहीं हो पाता है. बिकॉज फाइल सिस्टम में क्या होता है, यू हैव टू राइट a specific application program for a specific task. ठीक है. So over a time when requirements changes or you add more and more requirements, आपको क्या करना होगा, वहां पे numbers application programs लिखने पड़ेंगे for a specific task and it becomes very cumbersome to manage all that, क्योंकि उन programs का आपस में कोई interaction भी नहीं होता है. But here what it is, a complete package in which you are working. So everything is related with each other. So it is very easier to maintain your database for a long period of time with the changing environment, you can say, with the changing environment of the requirements. So it provides you protection as well as managing over a long time period. Is that clear? Yes. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Okay. So it is 10:30. So we will start this topic in next lecture. ठीक है. अब आपका मेरे ख्याल से थर्सडे को लेक्चर है ना. Tomorrow is Wednesday. Tomorrow नहीं है, थर्सडे को है. So Thursday we will cover this one, database system versus file system. कुछ चीजें तो आपको अभी तक के डिस्कशन में समझ में भी आ गया होगा कि yes, when we are working with the Excel sheets and we are storing the data, so yes, these are the difficulties which we are facing. जैसा मैंने कहा कि यार आपको हर रिक्वायरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. ठीक है. जैसे आप एक्सेल में जा रहे हैं तो अगर मैंने कह दिया कि ठीक है, just fetch all the students who are living outside of the Jaipur, तो आपको एक प्रोग्राम अलग से लिखना पड़ेगा जो स्ट्रिंग पे काम करेगा और वो सारा डेटा फैच करेगा जहाँ पे जयपुर नहीं है. फिर मैंने कह दिया कि ठीक है ऐसा करो, बिकॉज आई एम अ मैनेजर ना, तो मैंने कह दिया नहीं ऐसा करो, ठीक है जयपुर तो ले आए, ऐसा करो तुम फटाफट ऐसा करो, ये पोस्टल कोड दे रहा हूँ मैं, इस एरिया में कौन कौन लोग रहते हैं वो डेटा लिया. एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने तो लिखा नहीं है, तो आपको दोबारा से एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उसके लिए फाइल सिस्टम में.
ठीक है, फिर आप डेटा लेके आ गए, हाँ मैं मैनेजर। मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, इस पोस्टल कोड में भी ऐसा करो, हमारे पास एक और फाइल है, उस फाइल में तुम जाओ और वहां से वो डेटा निकालो, जो लोग उस पोस्टल कोड पे तो रह रहे हैं बट जिनका इनकम जो है वो ईयरली 10 लाख से ज्यादा है। You will frustrate, what is this? I don't have such programs, I have to write each and every program again and again, what is this? तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट जब आप डेटाबेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा यार, इट इज वेरी इजी टू हैंडल सच सिचुएशन। मैंने एक रिक्वायरमेंट दी, आपने एक क्वेरी लिखी, 2-3 टेबल को कंबाइन किया, द